रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स इज द साइंस ऑफ डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ऑपरेटिंग एंड अप्लाइंग रोबोट्स टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर एक चलता फिरता सा एक कंप्यूटर है हमारे पास, जो कि हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेट सिस्टम करा जाएगा, डिजाइन किया जाएगा सिस्टम को, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सिस्टम को, देन उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेट सिस्टम किया जाएगा, which is the operating system of that robot, and applying the robots to solve the human problems. Robots come in a thousand of shapes and the size, making it difficult to nail down the precise meaning of a term. So, Boston Dynamics Atlas, the field of a robotics research, has evolved at the breakneck speed over the past decades. Most robots rely on an expert system. We have discussed about the expert system to accomplish their objective, or we are saying that to accomplish a specific task only. But the robots of tomorrow, अब further क्या है कि वो खुद ही learn करें, machine learning and the deep learning should be there. But the robots of a tomorrow will become exponentially more useful by incorporating machine learning, right, computer vision, and the natural language processing into their operating system. So जो अभी हम robots generate कर रहे हैं, that should be that should implement the machine learning or the deep learning. If we are saying that the natural language processing, we are saying somewhere we are going towards the deep learning here and the computer vision. So now the operating should be advanced operating systems. So here we have discussed about the journal टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, राइट, दैट कम्स अंडर द एआई फाउंडेशन टेक्नोलॉजी। बट बेसिक की बात करें तो फाउंडेशंस जो है एआई है क्या, और जो कंप्यूटर भी है वो क्या है, एक मैथमेटिशियन ने ही डेवलप किया है, राइट। तो मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 फाउंडेशंस which have a some specific meaning: machine learning, expert system, computer vision, natural language processing, and the robotics.